Did any prophet came in this world before Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam as a universal prophet? Prophets came who were a sort of universal, in the sense that the world known during that time was very limited. So the world known to them was the entire universe for them. So in relative terms, universal prophets also came. But the universe was a very small universe. Like the Judaism. The Holy Quran repeatedly refers to the word Alameen. We chose them above the Alameen, the entire world. But their world was small. So this is the meaning of the word Alameen. And about Ahmad sallallahu alaihi wasallam, we can say that during his reign, the world would have expanded. And this was a prophecy of the Holy Quran, that we are going to enlarge the world. So at that time, at the time of Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, America was not discovered. But later on, during his age, America was also discovered, and the world was enlarged in that sense. So Alameen differ relatively in relation to the situation of existing or prevailing at a time. The Alameen can be small and larger. कौन सी पसंद है? हैं? ये? गुलाब जामुन वाली, अच्छा ये ठीक है. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी उम्मी को कौन सी पसंद है? सेम. अच्छा, आपको 2 गुलाब जामुन दे दो. और तुम्हें कौन सी पसंद है? ले ली और उनको दे दिया. ठीक है. अच्छा, अब आप मुझे इजाज़त दें कि वक्त हो गया है. जी जी. और ये मिठाई जो है ये इनको तकसीम कर दें. ये 2 लिया करते हैं, एक अपनी बीवी के लिए और एक तुम ले लो. आ जाओ. आज नज़म भी कोई नहीं हुई, फिर भी वक्त गुजर गया. सवाल भी मैंने छोटे छोटे जवाब दिए हैं. तो इसी तरह ये दुनिया जा रही है. एंड क्या कहते हैं आप, टाइम फ्लाइज को, समय उड़े जाए. समय उड़े जाए. उड़े जाए. ठीक, समय उड़े जाए. माइक. अच्छा, मैं देता हूँ, फिक्र न करें, मैं आपको माइक लेके नहीं जाऊँगा.